have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Good morning guys, it's day 3. This is our third day, so we stayed at last night at Katni. एक होटल पे रुके हुए थे, बहुत टायर्ड थे तो होटल का वीडियो नहीं बनाया हम लोगों ने. So we had breakfast this morning and freshen up quite a bit and रात को नींद भी अच्छी हुई थी. So it's all good to go. 300 kilometers to reach our destination. और रास्ते पे कहीं कुछ मिल गया तो probably we'll get down and have a look around. कुछ view मिला तो I think Jabalpur, where we are planning to get down and refresh for a while, and then done for the day and done for the trip. This trip. हम लोग जबलपुर में रुके हुए हैं अभी. यहाँ पे इस जगह का नाम है भेड़ाघाट वाटरफॉल्स. तो बहुत ही सुंदर जगह है ये. इट्स रियली नाइस प्लेस. यहाँ पे धुआधार वाटरफॉल्स है. सो हाईवे से बस 15 किलोमीटर्स अंदर है. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. सो वी हैव टू रियली स्टॉप एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस. So guys, we are entering through the Bhairaghat Waterfalls market. Due to COVID situations, few shops are still not operational. You would get souvenirs made from white stones, which is the specialty of this region. पत्थर का है मार्बल का है ये सब? पत्थर का है. पत्थर ग्रेनाइट का है क्या? मुझे पत्थर का चाहिए. गोल वाला हो. ठीक है, आने के टाइम में पत्थर का भी मिल जाएगा. मिलेगा ना? अंकल ये कछुआ भी पत्थर का है क्या? सभी पत्थर का भी है. कछुआ कितने का है? छोटा वाला? सभी रेट का है. छोटा वाला एकदम 40 रुपये का. ठीक है, आने के टाइम में लेते हैं. गाड़ी आ रही नहीं. भूल जाइए 10 का. सब पत्थर का काम है. 10 रुपये का नाम भी लेते. 10 रुपये जो नाम बोलेगी 10 का लेते. ये सब पत्थर का है भैया? हाँ पत्थर का. भूल भी जाइए नाम बनने. ये सब का कितना है जो बनाया आप? जैसे कि कोई भी एक ये वाला देखिए 600 का. This is the main location. This beautiful river is called Narmada, and it's ending up creating a massive and powerful waterfalls in Jabalpur district. So here it is. So guys, this is the exact location where the Ashoka movie's one song was shot, featuring Shah Rukh Khan and Kareena. This place is really unique and I wish we could spend some more time over here. मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, but I've already started liking this place. Just feel like sitting on the rock at the edge and feel the sound of the waterfall for hours and hours and hours. It's so relaxing. So after spending an hour or two at Bhairaghat, we are back on road. We're about to reach our final destination. As you can see, the road condition in MP is really smooth
clean and well maintained. It's a pleasure being on this highway. Thank you for being with us in this very long trip. I'm really glad to have made it to this part of India. Keep supporting me and I shall see you guys in my next video very soon.